Hello everyone, welcome to Services classes. This is Ashmita. In today's class, we are going to solve questions from Civil Services Examination of this year. And I'm going to choose 3 to 4 questions max to max in each of the videos, as we are going to discuss each of these questions in details. So apart from that, if you want to prepare well for your entrance exams and competitive examinations, then आप हमारे classes में join कर सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा. वहाँ पे हमारा जो क्लासेस का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सभी दिया गया है. एंड फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स आपको क्या करना पड़ेगा सभी डिटेल्स दिया गया है. And you will also get, if you enroll with us, you will also get live lectures, recorded lectures, portal access जो 24/7 available रहेगा enroll candidates के लिए. Doubt clearing sessions, interactive sessions and mock tests are also there. Study materials के लिए आप Amazon, Flipkart से भी खरीद सकते हैं हमारे यहाँ पे जो study materials हैं. तो इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट्स हो रहा है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो रहा है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स नीचे है, आप अपने कमेंट्स को पोस्ट कीजिए. वहाँ पे हम आपके सभी प्रॉब्लम्स का आंसर प्रोवाइड करेंगे. तो चलिए लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस डिस्कशन. we are discussing question number 26 first. Which one of the following best describes the concept of small farmer large field? Small farmer large field का मतलब क्या है? Small farmer large field का मतलब है many marginal farmers in an area organize themselves into groups, okay, and synchronize and harmonize the selected agricultural operations. ये है इसका मतलब. तो इस कॉन्सेप्ट में एक्चुअली क्या होता है इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे. In this concept, small farmers with fragmented land holdings, मतलब कि जो छोटा छोटा land holdings है, divided land holdings, they come together to form groups or cooperatives. अब एकजुट हो जाते हैं. By pooling their resources and efforts, they aim to optimize their agricultural operations. This may involve coordinating activities जैसे कि land preparation करना या फिर irrigation activities, sowing activities, harvesting activities या फिर कोई marketing activities. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो एक साथ आना, ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो एनहांस देयर बार्गेनिंग पावर इन द मार्केट. बाय वर्किंग कलेक्टिवली या फिर एक साथ अगर हम काम करेंगे, मतलब ये जो फार्मर्स है स्मॉल फार्मर्स, अगर ये लोग एक साथ काम करेंगे तो स्मॉल फार्मर्स कैन डेफिनेटली ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ देयर इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स एंड दे कैन इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो इसीलिए ये ऑप्शन सही रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर, फॉर नाइजर सीड्स. नाइजर का साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया गया है ब्यूजोटिया आर्सेनिका. सो दिस इज द साइंटिफिक नेम. तो पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ एक छोटा सा टिक. दिस इज ओके, नो सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, आई एम पुटिंग अ क्रॉस ओवर हियर, स्मॉल क्रॉस. स्टेटमेंट 1 को अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द नाइजर सीड्स. ओके, नाइजर पहले तो एक प्राइमरली एक ऑयल सीड क्रॉप है दैट इज ग्रोन फॉर इट्स ऑयल रिच सीड्स, but it is not covered under the minimum support price scheme. Okay, that is why the first statement is incorrect. Let's move over to second statement. Second statement कह रहा है कि Niger is cultivated as a kharif crop, मतलब समर सीजन में होता है. समर सीजन में साव होता है. खारिफ क्रॉप मतलब जो no, it is sown during the monsoon season, typically between June and July. Okay, so Niger is indeed cultivated as a kharif crop. It is sown during the monsoon season, just now as I have told, and it is mostly sown between June and July. Okay, so yeah, this is correct. I'm putting a small tick over here. Let's move on to the third statement. Now, third statement says some tribal people in India use Niger seed oil for cooking.
yes, this is correct. Why? Because this some, definitely some tribal communities in India do use Niger seed oil for cooking purposes because Niger seed oil is known for its high smoke point and is commonly used in certain regions for frying or for cooking the traditional dishes. Okay, so yes, two of them are correct and one is wrong. So we are going with option B, that is only two are correct. Okay.